नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। ऋषि सुनक इतना इंटेलिजेंट है, इतने पैसे वाले हैं एंड दैट ही इज रिचर देन इवन द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, बट फिर भी हार गए। बट इट्स नॉट दैट। मुझे खुशी इस बात की कि आखिर वो इस रेस में तो खड़े हुए और इतनी आगे तक आए। दैट्स द फर्स्ट इंडियन हु हैज गॉन थ्रू दैट एक्सटेंट। बट हम लोग सोचते हैं कि जनरली ज़्यादातर जो यूके में लड़कियां होती हैं बहुत स्मार्ट है, कनिंग है, क्लेवर है, इंटेलिजेंट है। यहाँ पर थोड़ा-सा उल्टा है। यहाँ पर थोड़ी-सी चीज़ें अलग हैं, जो लोगों ने समझी नहीं है, जिनको ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं पता है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं किशोर दत्तू, वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड्स, और ही इज़ बेस्ड इन यूके फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ही इज़ अ वेरी कीन पॉलिटिकल ऑब्जर्वर एंड इंजीनियर बाय प्रोफेशन, और काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। सो किशोर दा, आपका ऑल टाइम मीडिया पे बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते गायत्री जी, फिर एक बार धन्यवाद। किशोरदा, लिस जो है कितनी इंटेलिजेंट है, जो ये वो यहाँ तक आ गए, और ऋषि सोनक कितने फुलिश है कि वो जीती हुई बाजी हार गए। जी, अगर कंपेयर करें दोनों के बीच में एजुकेशन क्वालिफिकेशंस या उसका जो बॉटम रहता है ना, बचपन से लेके जिसका स्कूलिंग है, कॉलेज क्या, कौन सी कॉलेज क्या है, तो ऋषि सुनक को आप यहाँ ऊपर खड़े रहना चाहिए, ऋषि सुनक कंपैरिजन में। लेकिन लिज जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड विशेस टू हर, कांग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग दिस रेस। वो सादा सीधा नॉर्मल मिडिल क्लास नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल जैसा काउंसिल स्कूल हम बोलते हैं, तो वहां से वो पढ़ के आई। एंड शी इज नॉट वेरी वेल स्ट्रेटेजिस्ट एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन अचानक उसको रेस में आना पड़ा। शी इज प्रॉब्ली अ लेट एंट्री इनटू द रेस, क्योंकि जब ऋषि सुनक ही वाज द फर्स्ट वन, पहली कंटेस्टेंट था इस रेस में। एज सुन एज बोरिस जॉनसन रिजाइंड, immediately Rishi Sunak started campaigning, ready for Rishi बोल के। So late entry है, तो वहां भी everybody was thinking he was a hot favorite. He was like, even before the campaign started, he was dubbed as the future prime minister, क्योंकि उसका ratings within the party and across the country also was decently high. जो फरलो स्कीम उसने ड्यूरिंग द पैंडेमिक जिस तरीके से हेल्प किया था, और जस्ट बिफोर दिस रेस इन इवन इन मार्च एंड अप्रैल जिस तरीके से वो एनर्जी कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से वो जो डोल आउट दे रहा था, पैसे दे रहा था सबको, ही वाज इन हाई रेटिंग्स। लाइक अचानक जैसे ही लिज ट्रस आई, शी स्टार्टिंग टू लूज द ग्राउंड। तो हम देखेंगे कि वाई दिस थिंग, आई इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि बहुत सारे मैं भी देख रहा हूँ कि मीडिया में ऋषि सुनक इसलिए हार गए, वो रेसिस्ट है, कंट्री पूरा रेसिस्ट है, वो इंडियन है उसीलिए वो जीते नहीं। तो as far as I know, as far as I see, there is nothing like that. So this is where it's very clear. It is some of the mistakes that Rishi Sunak has done that costed him in this race. Otherwise, Rishi Sunak, you would expect on a normal day to win at any given at any time and any chance. So if you compare, you call Rishi Sunak intelligent because he's a financier. He has been a chancellor, but at a very young age. He was only 42 now. And if you compare what he has done at the time of the pandemic, he was only just a month into his job, and pandemic hit in. So within no time, उसने ये फरलो स्कीम जब आया था, वो स्कीम पता नहीं, वो शब्द भी किसी को पता नहीं था कि फरलो स्कीम, फरलो है शब्द क्या है बोल के। So he was so far advanced thinking. Within no time, he brought that scheme, saved millions of jobs, and tried to save the economy. Eat out, help out scheme बोल के आया था। तो he's a natural thinker in a way. लेकिन Liz Truss, on the contrast, this is as her colleagues in the department where she worked says that she's shallow in her ideas, and wherever she finds an idea, if she likes it, she tries to pushes it. So she's not an original thinker. That's what they say. लेकिन अचानक क्या हुआ कि जो रेटिंग्स हाई था ऋषि सुनक का, वो नीचे जाता रहा, and towards the end, the result was like 57 versus 43%. So 57% in the party members vote. 57 people voted
percentage of people voted Liz and 43% voted for Rishi Sunak. If you have to go detail, दिस इज ओनली 160,000. तो 1,60,000 लोगों का बीच में ये मेंबरशिप वोटिंग था, बस, पूरा देश का नहीं. नंबर वन. उसमें से लगभग 80,000 वोट्स लिस्ट को आई और 60,000 वोट्स ऋषि सुनक को आई. इफ यू गो इन डिटेल तो यू कैन नॉट से कि पूरा एकदम से भारी जीतता, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फर्क जो है विद इन 160,000 वोट्स, 1,60,000 इसमें से the difference is only 20,000. तो आप ऋषि सुनक को जितने लोग वोट किए हैं, इक्वली वेरी वेरी substantial amount. Number one point is Rishi Sunak came as a front runner during the conservative MPs voting rounds. So 3-4 बार, क्योंकि लगभग 7 या 8 contestants थे, so by elimination process, each time Rishi Sunak was getting better, he was getting stronger with MPs. So he has a fair ground on MP's side. Only when it came to members voting, that's when he started to lose ground. And this movement can be defined, in the history as Ken Clark 2001 movement. क्योंकि क्लेन क्लार्क एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन कंजर्वेटिव का ही 2001 में कैंपेन हुआ था, एग्जैक्टली सिमिलर वे, to become the leader of the party. तो केन क्लार्क एंड डंकन स्मिथ, इयन डंकन स्मिथ है, दोनों के बीच में केन क्लार्क came as number one in the MPs voting rounds, but when it went to members votes, Duncan Smith won hands down, क्योंकि he's got about 60% and Ken Clark got only 40%. So eventually Duncan Smith could not retain his premiership for leadership not more than 4 years, and then he lost it, he gave it up, and they predicted the party even lost more ground when Duncan Smith was there. So this movement, even when we celebrate or when we congratulate Liz Truss, it may not be long lived. अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है जो लिज ट्रस है बहुत ज्यादा लंबे टाइम नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बहुत नहीं चलेगी. अच्छा, इसमें सबसे दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस करें कि एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऋषि सुनक वॉज पहले से ही तैयारी कर रहे थे. मतलब कहा जाता है कि बोरिस जॉनसन इस वजह से भी गुस्सा थे कि ही डिड नॉट वेट फॉर द राइट टाइम कि ये आगे आए, बल्कि वो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर थे और ये पीछे से अपनी तैयारी इन्होंने चालू कर ली थी. मतलब स्मार्टनेस दिख रही थी लोगों को, थोड़ा शायद कनिंगनेस भी नजर आने लगी होगी. एक प्राइम मिनिस्टर बनने की जो क्या बोलते हैं पैशन बोलो, ऑब्सेशन बोलो, वो भी इनमें चालू हो गई थी. बल्कि लिज इज लाइक अ गर्ल नेक्स्ट डोर. अभी हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने बल्कि लिखा है कि उनका शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह भी था, बट वो मैटर नहीं बना इस पूरे टॉक में. शी इज लेस क्वालिफाइड, शी इज नॉट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, शी इज लाइक एनी अदर नॉर्मल गर्ल, बट वो जीत गई. तो वो जीतने के पीछे रीजन क्या है किशोरता? लाइक कॉमन चीजें क्या है जो लोगों से वो कनेक्ट कर पाए? और ऋषि सुनक, डिफरेंस बहुत छोटा ही है, उनकी डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन बाद में उठाएंगे, बट ये हाउ डिड शी कनेक्ट मोर देन ऋषि सुनक? जी, तो इसमें क्या है, मेन पॉइंट ये है कि लिज ट्रस अंडरस्टूड द ग्राउंड रियलिटी और द पल्स ऑफ द पार्टी मेंबर्स, नॉट जस्ट एमपीज. और बेचारा ऋषि सुनक, ही वाज लाइक फिजिकल डिसिप्लिन होना चाहिए, टैक्स कट नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में हमको इफेक्ट होगा. तो ही वाज थिंकिंग इन अ गुड इंटेंशंस फॉर द इकोनॉमी इन अ लार्जर इंटरेस्ट. लेकिन लिज ट्रस को वो परवाह नहीं, अभी मेरे को ये जीतना है, ये जीतने के लिए मेरे को टैक्स कम करना है. इट्स अ पॉपुलिस्ट. कॉस्ट ऑफ लिविंग अभी फिलहाल यहाँ यूके में चल रहा है कि प्राइसेस बढ़ रहा है, क्योंकि ये रशिया के वॉर के हिसाब से, इसके वजह से एनर्जी, गैस प्राइसेस एंड इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ गया. तो इसके हिसाब से पूरा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. सो द इमीडिएट आंसर टू दैट वाज टू कट द टैक्सेस. एंड होल ऑफ द इकोनॉमिस्ट, जो बैंकिंग सेक्टर में है या फाइनेंशियल सेक्टर में, ट्रेजरी बेंचेस में है, से कि कटिंग द टैक्सेस मे नॉट रियली हेल्प एंड इट्स नॉट अ गुड आइडिया इन द लॉन्ग इंटरेस्ट. तो लिज ट्रस इसलिए जीती, मेनली वन ऑफ द रीजंस वाज दैट शी वाज ट्राइंग टू गिव अ इमीडिएट रिलीफ. लेकिन ऋषि सुनक वाज लाइक, मैं अभी 4 साल के बाद 1% टैक्स कम करूंगा, 9 साल के बाद और एक 3% कम करूंगा. तो ही वाज टॉकिंग लॉन्ग टर्म, वो नहीं चाहिए था लोगों को. नंबर वन. नंबर टू, Rishi Sunak, back to back, he was fighting
he was fighting campaigns in a way against him. So he was carrying a lot of burden against him. क्योंकि उनका जो पिछले जो जो 20 साल पहले कुछ बोला था वो सरफेस आ गई कि अच्छा इसने 20 साल पहले ऐसे बोला था, तो दे वर कमिंग टू सरफेस एंड देन ही वाज ट्राइंग टू डिफेंड इट. बट कॉन्ट्रास्ट लिज ट्रस का कॉन्ट्रोवर्सीज कुछ नहीं है, सिर्फ उनका तो यही है कि वो उसका सोच विचार नहीं है, उनका दिमाग नहीं है सोचने के लिए, अपना खुद का नहीं है. मतलब आप कह रहे हो कि खुद का दिमाग नहीं है, वो ठीक है, जनरली गर्ल्स के कॉन्टेक्स्ट में सोचा जाता है, बट ये डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे थे एंड वो लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही थी कि हाँ ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो, मेरे को तो जीतने से मतलब है, चाहे वो आगे चल के बर्डन कैरी कर पाए या ना कर पाए. Exactly, है ना? exactly. So The that's other reason is the important reason of all this is that Rishi Sunak is seen as perceived, at least the campaign was, as a backstabber. तो पीछे से चाकू लेके बोरिस जॉनसन को मारना चाहता है, ऐसा उसने कैंपेन चलाया, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट वन टू एंटर द रेस. जैसे ही बोरिस जॉनसन रिजाइन कर दिया तो बोला कि मैं रिजाइन करूंगा, इमीडिएट नेक्स्ट डे ही स्टार्टेड अ कैंपेन, व्हिच मींस ही इज ऑलरेडी वर्कड ऑन इट कि मैं इस टाइम पे मैं आऊंगा बोल के. दैट्स वन ऑफ द रीजंस. एंड गोइंग फर्दर ही कुड हैव वेटेड for some time, waited for others to resign and start the campaign, and then he could have entered from Boris Johnson's side with the support of Boris Johnson. Because Liz Truss, that is exactly what has happened with Liz. Liz kya hai ki she came as a sympathizer of Boris Johnson. So that, because for whatever the reason, Boris Johnson still holds very high reputation amongst the party members, not just the MPs mainly, but the party members. That's because he has delivered one of the biggest success for conservative parties for a long time. जो रेड वॉल बोलते हैं, जहां लेबर हमेशा 50 साल 60 साल से जीते आ रही है, वहां जाके रेड वॉल कॉन्स्टिट्यूंसीज बोलते हैं, वहां कंजर्वेटिव को इसने जिताया, नंबर वन. एंड जिस तरीके से ब्रेक्सिट उसने किया, गेट ब्रेक्सिट डन कैंपेन के हिसाब से 2019 में जब इलेक्शन हुआ था, एंड जिस तरीके से उसने पुतिन के खिलाफ अपने यूके को खड़ा किया था, he was trying to oppose Putin in support of Ukraine, also one reason. And during the pandemic also, given and take some mistakes, he was fairly doing very well in support of the country. तो उसी लिए क्या है कि पार्टी मेंबर्स में इनका पॉपुलैरिटी हाई है. So when people see them as backstabber, they could not digest it. That's one of the main reasons that costed Rishi Sunak. But coming back to racism query, because I see this very in and out of every news channels, every media in India especially, कि racism है, Indian है उसीलिए उसको हराया, ऐसा कुछ नहीं है. क्योंकि if you see the statistics of the party members in conservatives, Indians, Indian origins, constitute about maybe about 1200 to 1500, not more than that, conservative members के. But the number of votes that Rishi Sunak has got 60,000, उसको 60,000 वोट आए हैं. तो ये कौन, यहाँ के लोग ही वोट किए थे ना उनको, तभी उनको एटलीस्ट आया. एंड द सेकंड थिंग इज he is risen to that position where he can contest for the top job. So he was in the top two in a way. So you cannot accuse कि यहाँ racist है. There could be minor issues where you can claim that, but by and large. लंबे टाइम से रहती हूँ यूके में, आपको ऐसा लगता है कि वहां पर रेसिज्म, देखिए एक्सेप्शनल केसेस को रेसिज्म नहीं बोल सकते हैं, अब 100 में से कहीं एक आध हो जाए तो उसको नहीं बोल सकते, बट आपको लगता है कि हमारा रेसिज्म है इतना ज्यादा, जिस तरीके से अभी हमारी मीडिया ने उठा रखा है, स्पेशली इंडियन मीडिया ने, कि नक्सलवाद, रेसिज्म, इस तरीके से चीजें हैं क्या? क्योंकि आप तो टीका लगा के जाते हैं ऑफिस, आप कितनी बार इंडियन अटायर्स में अपने आप को कैरी करते हैं, मैंने देखा आपके फोटोग्राफ्स. आपको लगता है इस तरीके से कि वहां पर रेसिज्म है क्या? पीपल इतना अकोमोडेटिव नहीं है क्या वहां पर? By law, with all measures and means, there is no racism. There should not be any racism. That's what it's supposed to be. Idea. यहाँ के लॉस इतना कठिन, हाँ, जितना यहाँ के लॉस कहीं पे भी इक्वालिटी पॉलिसी में भी ब्लैक एथनिक माइनॉरिटी बोलते हैं, उसके पॉलिसीज के हिसाब से तो इक्वालिटीज यहाँ देते हैं, मेनली बिकॉज बीइंग ए कॉलोनाइजर इन द प्रीवियस एरा, seen as
people who conquered all the world and did all the bad things. They want to come out of that uh, branding in a way. That's why they tried their best not to get into such inequalities and equalities, rights and racisms and all that. They tried their best. But as far as my personal opinion, I did not see much of racism, and the British people, the local people, have been very very sympathetic and very very kind to accommodate whatever the systems that you come from. No matter you're a Hindu or Muslim or Buddhist, anything like that, they've always respected. And here we have to see the generational gap between two generations as well. The older generation might still have that ब्रिटिश राज एरा हमने रूल किया था, ये किया था बोल के. But the current generation or just yesterday generation, they don't have it because they see the real world. They are connected more into reality ki abhi, India is the fastest growing economy, fifth largest economy now. So in that sense, there is a wide difference between the generations as well. Whether which generation you're talking to, you might see, okay, older generations, you might see acha white domination, white racism. Lekin if you talk to your contemporary of my age, just about my age, then you will not find much. मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, एवरी फ्राइडे ये लेकर जाते हैं घर का बनाया हुआ खाना फॉर हिज कोलीग्स इन द ऑफिस. क्या सर किशोर दा, क्या लेके जाते हो? अप्पम लेके जाते हो या इडली वगैरह लेके जाते हो? नहीं, सब कभी भी जो भी स्पेशल बनता है, तो इडली, डोसा या पनीर, ये देखने का नजरिया है. आई थिंक इसको नेगेटिव दिखाने के बजाय इसको पॉजिटिव दिखाना बहुत जरूरी है कि ही इज ग्रोन टू सच लेवल. मतलब मैं भी अफ्रीका में रहती हूँ, अगर मैं ये बोलूँ यार रेसिज्म है, सी कुछ लोग हैं जिनके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है, वो गॉन केसेस हैं, उनकी कुछ नहीं की जा सकती है. पर उस चीज को हाईलाइट करना मीडिया में कि ये रेसिज्म, एक्सेप्शनल केसेस को आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो. आज के डेट में मीडिया ये क्या करता है, एक्सेप्शनल केसेस को जनरलाइज कर देता है, फिर वो ना डिसेंसिटिविटी भी आ जाती है. मैंने भी नहीं देखा है, एक्सेप्शनल केसेस हमेशा हर जगह होते हैं, तो उनके बारे में बात करना बेवकूफी है. क्योंकि किशोर दा तो वहां रहते हैं, वहां पे मेरे ख्याल से तकरीबन आई थिंक ही इज अ पीआर आल्सो ऑलमोस्ट 10-12 इयर्स. इनकी वाइफ भी हमेशा अपने आप को इंडियन अटायर्स में ही कैरी करती है. टॉकिंग ऑफ रेसिज्म लुक्स रियली बैड, व्हाटएवर द रीजन इज. आई थिंक इट्स नॉट दैट. मतलब मैं यहाँ पे क्या बताऊँ अभी, ठीक है, ही डजंट टेल मच, बट साउथ इंडियन खाना लेके जाना, टीका लगाना, पूजा पाठ करना, एंड इनफैक्ट आई हैव सीन लॉट ऑफ ब्रिटिशर्स एंड अदर पीपल आल्सो गोइंग टू सच थिंग्स. दे वेरी नाइसली दे विजिट द टेम्पल्स, और हमारे स्टाइल में जूते उतार कर. दे माइट नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज वो हमारे कल्चर से नहीं है, बट वो उसी स्टाइल में करते हैं हमें देख के जैसा हम करते हैं. सो रेसिज्म के बारे में बात करना थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है. अभी ऋषि सुनक they are very accommodative, and in terms of Rishi Sunak, coming back to the main topic, he is, he himself openly declared that I'm a proud Hindu, my heritage. So he was very clear of his identity, number one. That should inspire so many people, for his clarity in thought and identity. He was able to inspire a whole generation of Indian origins, at least here, to aspire for a bigger job. There's no wrong in aspiring, and he's native to it. He's born here, so he's a brand ambassador of a British Hindu, not just British Indian. Because I think that's also one of the facts that overplayed was the Indianness of his, because so many Indian origins or Indians here have overplayed his Indian connections. Rather not needed at that point of time, because he should have been a son of a soil kind of promotion would have really much helped him to connect it. And one of the controversies that also he had to fight was the green card controversy, where क्योंकि वो पहले यूएस में काम भी करता था, तब उनका ग्रीन कार्ड है. देन it came into light कि उनके पास he still holds a green card, but it took a long time for him to clarify कि जब वो फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ बना 2020 में, he is given up the green card, but the damage was already done to show that he's not connected to UK, and he's not serious about staying back in the UK. बोल के that's one of the controversies that costed him this thing. But one of the major triggering point of his whole all this back-to-back backlashes for him was the in a video वो बोलता था कि मैं यहाँ के पैसा उठा के या साउथ में ही, यहाँ भी नॉर्थ एंड साउथ का डिवीजन है, साउथ में थोड़ा ज्यादा अमीर है या ऑल वेल डेवलप्ड एंड ऑल, नॉर्थ में थोड़ा और भी कम डेवलपमेंट है. तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो
he said कि मैं यहाँ के पैसा लेके यहाँ दे रहा हूँ, but the government official policy है in a way, this plan है कि leveling up scheme बोल के, where they're trying to level up the northern side of the country on par with southern side. So that doesn't fit to the whole agenda of the government. On one side is, they're trying to do this leveling up, another side he said कि now I'm taking money out of and giving this south urban, southeast constituency Kent में वो बोला था. That actually costed him fair bit of ground. The other controversy that really costed was, he spent resources was the his wife domicile status. क्योंकि वो Indian origin है, she still holds Indian passport, and she still holds less than 1%, just about 0.93% of Infosys Narendra Modi के बेटी है, तो वहाँ का shares. So that makes her the richest MP's wife. And she's richer than Queen. So in that way, they were dubbed. Remember, क्योंकि अभी आप बात कर रहे हो कि some of the foolish mistakes that he made, foolishness. एक पहली मिस्टेक थी कि बोरिस जॉनसन के जाने से पहले अपने आप की कैंडिडेसी अनाउंस करना है, अपने आप को शो करना कि भाई आई एम द नेक्स्ट पीएम. और दूसरा कि जो इनका जो एक्स्ट्रा वेजेंट लाइफस्टाइल है, अपने स्विमिंग पूल पर, आप ही ने बताया था मुझे, प्लीज एलैबोरेट सर. जी, तो ही सब बैक टू बैक ये मिस्टेक्स हो रहा था कि ऑफ कोर्स अक्षता मूर्ति उनका वाइफ का तो उनका मिस्टेक नहीं है. ही इज नो वे रिलेटेड टू नॉट टू से कि आपको होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए. उनका पापा का गिफ्ट था कि 0.93%, जस्ट 1% भी नहीं है. तो दैट लेकिन क्या है कि शी वाज नॉट पेइंग टैक्सेस फॉर हर अर्निंग्स इन इंडिया. तो यहाँ शी इज ट्राइंग टू सेव मनी. 20 मिलियन पाउंड्स तक बिल आता था उसका टैक्स मनी. Then that also costed him. He was trying to convince no, she will pay and all that. The other thing is the extravagant or the luxurious display of his lifestyle, where he, in one of the famous budget, traditional pre-budget photograph, he is seen with a very costly mug, which costs about 220 pounds. तो लोगों को लगता है कि ये क्या जरूरत थी. तो दो आउट ऑफ टच है बोल के. Then he was wearing, even during the hustings meetings, he was wearing very expensive shoes and a suit. So people had an eye on him कि अच्छा ये तो बहुत expensive है. He's not ground reality. He's not one of us. He's like high level person है. ये बहुत अमीर है. Too rich to brown. हाँ, in a way, too brown. I will not say that bit. Lekin too rich है. In a way that has been promoted, campaigned silently by the opposite side, Liz Truss side. Very subtle way, very British style humor. उसमें जोड़ के, oh, I wish I can also afford such kind of this thing. So back to back क्या है कि उनका जो during the campaign, just before the campaign, वो स्विमिंग पूल, अपना स्विमिंग पूल रेनोवेट किया था, जिसमें उसने 4 करोड़ स्पेंड किया था, 400,000 pounds roughly. This was during during the race. So obviously there will be an eye on it. So the timing could have been different of an entry. Number one, उनका जो entry point था, whoever his political advisors are, probably advised him at the wrong time. Had he waited for some time, and he waited in the last minute or just after people started joining the race, then that could have given him more advantage, including in the party members on ground. And the second thing is the unnecessary display of lavish lifestyle also costed, because in politics कि aesthetics matter. एक तरफ जब लोग महंगाई से परेशान हो, फूड रिजर्व्स, फूड जो है, जो फूड आइटम्स हैं, उनके प्राइसेस इतने हाई चल रही हो. मैंने सुना है ये जितने भी फ्यूल्स हैं, चाहे गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सबके प्राइसेस हाई हैं. उस टाइम पे आप दिखा रहे हो कि आपने 4 करोड़ वेस्ट कर दिए जस्ट स्विमिंग पूल बनवाने में, तो लोगों को डेफिनेटली वो डिस्कनेक्ट लगेगा. डेफिनेटली वही वो बाद में करते, इलेक्शंस के बाद में तो नोटिस नहीं होता. इलेक्शन से पहले किया सब कुछ, तो लोगों की नजर में रहता है. स्पेशली आपने खुद ही अपने आप को लोगों के सामने आगे कर दिया ना कि भाई मैं पीएम रेस के लिए हूँ. Exactly. तो ये तो the timing was not right, and the display of this extravagant or the luxurious lifestyle was also not needed. He could have controlled on that. And the third important thing, I think I've mentioned before, tax cuts. So he was not prepared to do any tax cut, though later on he came back and said I'll reduce the VATs and all that. थोड़ा उनको बदलना पड़ा policy, but he was very reluctant in decreasing the tax. On the other side, Liz was very
इमीडिएटली अच्छा पॉपुलिस्ट जब हम बोलते हैं ना पॉपुलिस्ट जो भी लोग सुनना चाहते हैं वो बोलती थी, वो कहीं पे भी गया और ही वाज लाइक नहीं नहीं हमको डिसिप्लिन होना चाहिए, हमको ये होना चाहिए, बाद में तकलीफ हो जाएगा, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा हमको इकोनॉमिक इसके हिसाब से बोल के, तो दैट आल्सो कॉस्टेड हिम लॉट। बट ओवरऑल अगर आप देखें the race for the fight between Liz Truss and Rishi Sunak to become next prime minister has been very inspirational from my point of view, because it definitely displays the wide amount of energy and the talent that the conservative party holds, coming from two extreme. वो तो woman है, the only third woman prime minister. She's still about to become prime minister, but she's only the third after Margaret Thatcher and Theresa May. So on the other side, very self-made family, Indian origin. Rishi Sunak, Indian origin, probably the first person of non-white to contest to this level, in the top two final battle. So that itself shows the extent of the British lifestyle, or the way that's been evolved over a period of time. अब अगर 1950s, 1960s, 1980s से लेके अगर आप देखें तो nobody would have imagined कि एक टाइम आएगा 1980s में, अगर आप देखें तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इंडियन ओरिजिन भी एक एस्पायर करेगा कि मैं भी पीएन बन सकता हूँ बोल के. तो इन दैट वे इट शोज द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ ब्रिटिश लाइफस्टाइल, ब्रिटिश पॉलिटिक्स एंड द डेमोक्रेसी एज वेल. जी किशोर, द व्हाट अबाउट द पाकिस्तानी एंगल, वेयर बिकॉज इंडियन ओरिजिन का बंदा पीएम अगर फाइट कर रहा है और पाकिस्तानी लोग उसको अपोज नहीं कर रहे हो या बैकस्टैब नहीं कर रहे हो, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. तो वो सिनेरियो कैसा था वहां पर, क्योंकि पाकिस्तान की अच्छी खासी पॉपुलेशन है वहां पर. जी, there's a significant Pakistani population as well, of course. Sajin Javed, who is a Pakistani origin, again a very good success story. Is very humble backgrounds again, but risen up to become, just before Rishi Sunak was given this job back in 2020 as finance minister. उससे पहले सजिन जावेद ही था. Sajin Javid resigned, and then Rishi Sunak got the job. So even to become a chancellor of the exchequer, the finance minister, was a success story for Pakistani. So he was like the fountain of success for Pakistani origin in the Conservative Party, at least. He is ranked up. Lekin it is, of course, this division of India, Pakistan is bound to come up. And naturally, as far as I know, as far as I've read, majority of the Pakistani origins supported Liz, for all fair reasons. It's their own right, it's their own prerogative. So obviously it is going to have that division, and some of the votes, the difference जो 20,000 का difference था दोनों के बीच में, 80,000 और 60,000 के बीच में जो था, it's made up of people who pursue or perceive Boris Rishi Sunak as a backstabber, and people who may not really like Liz Truss, but they don't like Rishi Sunak. That's why they've voted Liz. कभी भी ऐसा होता है ना कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन जो सामने आदमी मेरे को सच में पसंद नहीं है, then I'll go, I hate, मैं द्वेष करता हूँ इतना कि I'll go with you. बर्दाश्त नहीं हो सकती थी कि भारतीय हिंदू, वो भी, बिकॉज आई शोड दिस फोटोग्राफ, तो आई एम श्योर ये फोटोग्राफ से बहुत लोगों को बहुत जली होगी, तो उनको ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आया होगा कि एक हिंदू, और वो भी भारतीय हिंदू, यूके का प्राइम मिनिस्टर बन जाए. तो ऑब्वियसली दिस वुड हैव फायर्ड बैक टू लॉट ऑफ पीपल बैक इन यूके. और वहाँ पे पाकिस्तानी, मैं अपने व्यूअर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं, वहाँ पर अच्छी खासी पाकिस्तानी पॉपुलेशन है. जो इंडिया पाकिस्तान यहाँ चलता है और पाकिस्तान में चलता है, वही इंडिया पाकिस्तान यूके में भी चलता है. ऐसा नहीं है कि वहां पर जाके बदल गया है. हाँ, वो अलग बात है कि बहुत सारे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी ये बताते हैं हमेशा, कोट एंड कोट, वी आर इंडियंस. दे डोंट से वी आर पाकिस, बिकॉज उनको फिर आसपास के लोग भाव नहीं देते हैं. तो वो डेफिनेटली चलता है वहां पर. जी किशोर था. नहीं, डेफिनेटली जो पाकिस्तानी एंगल था, इट वाज गोइंग टू सरफेस, बट in conservative at least, there was, I think we have to stress that yesterday, just after this,
Priti Patel, the other Indian origin MP and minister, very, very key profile. Home Secretary is not a small profile. So she also resigned from the cabinet. क्यों? But on the Why? no, because Boris Johnson was going to resign, so she served under Boris Johnson. So it was morally for her to tender the resignation. अगर अगर लिस्टर्स चाहें तो फिर से अपॉइंट करेगी, उनका ये है. Then but she was again one of the success stories for Indian origin as seen. So not just Rishi Sunak, yeah, Priti Patel, Alok Sharma. There are so many other success stories or top people. But until now, क्या है कि the rise of Indian origin MPs and talents has come into very, very prime light. But from now on is the question: what will happen after Rishi Sunak's defeat? In one way, he was able to inspire a generation of others, not just Indian origin, but anybody to become to that race, into the final race to become a prime minister. But his failure in the final race, will it trigger a negative backlash against all this? Is also a question. Somehow I don't see a negative backlash क्योंकि जिस तरीके से इंडिया की पोजीशन है, we are talking from a position of strength now. We are not talking from a position of being ruled. मुझे लगता नहीं है कि backlash उतना ज़्यादा होगा. हाँ, Pakistani और because as one of my viewers has also written about grooming gang and all, उस टाइप की चीजें जो उस टाइप के मेंटल सेट के लोग हैं वो हो सकता है डेफिनेटली पुल डाउन करें, बट मुझे लगता नहीं है बाकी यूके के लोग किसी तरीके से ये बैकलैश आएगा. एक एंगल ये है. दूसरा, अभी ऋषि की रेस खत्म कहाँ हुई है? दिस द फर्स्ट टाइम ही स्टार्टेड. ही कैन कम बैक अगेन एंड फाइट. देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट चांस. Yes. For now he said he needs rest. Much more जो उन्होंने मिस्टेक्स अभी की, जो फुलिश मिस्टेक्स की हैं, अभी पैसे खर्च करने का, महंगे जूते पहनने का, बिकॉज सी ऐसा नहीं है कि इंडिया में बिलियनर्स नहीं है. वी नो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, पर वो दिखाते नहीं है. और कब दिखाना है उनको ये पता है. ऋषि सुनक मे बी वो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम था पब्लिकली. Rishi Sunak was sincere in his attire, whatever it is. He did not act. He did not do any makeup just to see as pro. So he was not a full-time politician in a way. But he's aspired. He aspired to become prime minister, and he is very disciplined. He tried his best during the pandemic, and after that also to help people. So he's been genuine in his efforts, basically in his work. And the policies that some of the policies that he was wanting to campaign was the grooming gang. You rightly pointed out to that. He said he will act against grooming gang. It was no high profile ministers, politicians, and even did not speak about it. But he was Rishi Sunak was he said I will take action on this if I become prime minister. And he was again he was the first minister in a way to celebrate parliament in his home, right next to the 10 Downing Street, where he used to have his official residence. So he did not underplay his Indian or Hindu identity. He was always proud, and in fact he was asked कि आपका जो father-in-law है, one of the richest, Infosys वहाँ है, how do you see and all that. He said, I'm proud of his achievements, and I want that success story to be repeated in the UK. We want more jobs here. We want entrepreneurs here. So he was trying to talk to the businessmen, entrepreneurs, investors in a way. So he was very appealing for them, but not to the common members of the party. हाँ, मतलब ground पे देखिए, see, I think there were two more main oppositions to Rishi Sunak. Liz was an escape route for these people. Otherwise शायद ऋषि बन भी जाते. एक तो डेफिनेटली पाकिस्तानी, एंड नंबर 2 जो आप बात करें वाइट सुप्रीमेसिस्ट जो लोग हैं, जिनको भाई नहीं पसंद है कि हमारे देश का कोई भारतीय ओरिजिन का बंदा, हिंदू नहीं, आई थिंक हिंदू इज नॉट द कॉन्टेक्स्ट, बट हाँ भारतीय ओरिजिन का बंदा बन जाए और हमारे सर पे बैठ जाए, तो आई थिंक दीज टू आर द मेन ग्रुप्स जिन्होंने इनके अगेंस्ट में वोट किया होगा. एक चीज यहाँ पर और नोटिस करेंगे कि शोधा यू वर टेलिंग मी ओवर द कॉल कि Liz wants to take Rishi Sunak as one of his ministers. It is already there in news, and Rishi Sunak ने खुद कहा है कि मैं कंजर्वेटिव पार्टी को यूनाइटेड रखना चाहता हूँ because I think there is an internal fight going on there. जी. Yes. So I think if you come to the post these elections and all that,
Yes, Rishi Sunak said ki for now I need to recover from this campaign. So obviously, Vichara, he's fought very tough battle and he needs some rest. But he did not say no for future campaigns and future uh, premiership challenges and jobs. But he said he will support the government, and that doesn't mean ki he will be given or he will not be given. For now, he said he wants to stay as a member of parliament for his constituency. Going forward, we don't know. But problem is, when I referred to Ken Clark, the real reason was that because the majority of the MPs were not supportive of Liz in the initial rounds of party this thing voting, she may not get much support to drive the agenda forward. She may not. She might. I don't know. But over a period of time, it will become very clear that she will not continue. She will not be able to continue the government for long. So there could be a snap elections, and that's where Labour will have advantage, and that's where somebody mentioned ki Pakistan Labour is full of Pakistani dominated origins and all that. Yes, it is. It is very true. Labour has got that thing. They're trying to come out of that shackles. But thing is, that could be advantage Labour if there's elections and if there is no proper leadership. And the first test of challenge for Liz will be tomorrow when Parliament comes back for Prime Minister questions. Every Wednesday here, during the Parliament sessions, यहाँ Prime Minister questions होता है. So it will be interesting to see between Palmer and Summer and Liz Truss. So looking forward for it. Ji. Any other point you want to add, Kishorda, before we wind up? I think Starmer from the Labour Party, they are also watching it very very closely because obviously it is in their interest who wins or loses. Rishi Sunak could have lost this election, but he could have, if he won, he could have the Conservative parties. They think we'll have they will have the high chances of beating Labour Party in the next elections. But Liz Truss in charge of the party now, leader of the party now, they'll have less chances, and Starmer will have more confidence in going out for elections and beating because the cost of living crisis, the inflation going up, Russian aggression, this energy crisis challenge, winter aane wala hai, so there's going to be very very challenges. So probably in a high end side, probably not the right time for Rishi Sunak also to become prime minister, because historically also very very crucial times are going on. So it's very difficult to deliver that positive things that the country by and large. I think we've also certainly mentioned whether it's a success of the democracy or not. If only 160,000 party members decide करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो या देश का future क्या होगा, I don't know whether it's a success of democracy or failure of a democracy, because you're running a whole country in such serious times. Is a very debatable argument for me. जी, one of my viewers also wrote the same thing that we were discussing कि Liz Truss बहुत mediocre type की है, average है, but यही है कि वो जीती इसलिए because margin, अगर आप margin of votes भी देखें तो बहुत कम है. वो जीती इसी दो reasons की वजह से, जिन्होंने obviously opposite side vote किया because they can't handle the Indian sitting on their head. Maybe a very minor faction, but votes तो votes ही होते हैं. And दूसरा definitely the हिंदू आइडेंटिटी विच ऋषि सोनक वाज पोर्ट्रेइंग. बट एक चीज और है किशोरदा, ये वाला जो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट रेस था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि इसमें माइनॉरिटीज बहुत सारे थे. In fact, Yes. I remember there was a black African also who was contesting some lady, and there were other Yes. people also. Yes, So yes. Oh, definitely. That is exactly what I said. Ki it's a success of the evolution of the British democracy, the free lifestyle, dynamics of the country has changed over 1980 में. You cannot imagine कि कोई और खड़ा हो सकता है, जीतने का second अलग बात है, खड़ा हो सकता है, लेकिन things have changed, things have moved on. So we cannot still accuse just racism बोल के, जहाँ अपने खुद का mistakes भी है, no matter what. He is inspired. The campaign he has done is a positive campaign because he did not use any demeaning words. He did not use any aggressive against the other side. But the Liz Truss side was very नए वो हाँ ये नाइफ पकड़ के बोरिस जॉनसन के पीछे मारना, ऐसे मीम्स क्रिएट करके किए थे, तो शेयर किए थे. बोरिस जॉनसन का हाथ जो है इसमें किशोरदा, सॉरी टू इंटरप्ट यू,
बोरिस जॉनसन का हाथ भी था. He was right from the beginning in favor of Liz rather than Rishi Sunak because of जो भी उन दोनों के बीच में tensions थी during when he was the prime minister. I think more than the tensions, which is possible, during works. Main thing is he is seen as somebody who brought the Boris Johnson government down. That's the crux of it. He is seen because he was the first one to resign. That triggered further resignations, and that costed the job for Boris Johnson. और अगले दिन ही उसने campaign start किया ready for Rishi Sunak बोल के. He was the first one to start the campaign. That is why he was seen as a backstabber, and that costed him a lot. ये छोटे मोटे ये domicile status या green card, swimming pool, वो सब कम था. So obviously the sympathy factor for Boris Johnson also worked in favor of Liz Truss. So Liz Truss is somebody is seen as, because she was still in the cabinet at that time, she did not resign. She was still holding her position. तो उसके वजह से क्या है कि she was seen as a insider for Boris Johnson. So people who are sympathetic to Boris Johnson voted for her. जी हाँ, हमारे एक व्यूअर ने लिखा है कि मे बी इट इज गुड इन द लॉन्ग रन क्योंकि आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स और बढ़ने वाली हैं. यूके में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के कल कुछ मीम्स भी चल रहे थे सोशल मीडिया पे. इफ यू रिमेम्बर, इफ यू विन द लॉटरी इट्स लाइक 4 months इलेक्ट्रिसिटी बिल बीइंग वेव्ड ऑफ. उस टाइप के मीम्स बहुत आ रहे हैं अभी. सो आई मे बी इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर हिम, क्योंकि अगर ऋषि के हाथ पर आता तो वही हो जाता है कि ही इज नॉट केपेबल, ही इज नॉट दिस, ही इज नॉट दैट. So let her take the pressure, and maybe with coming times things will be better for Rishi. And Rishi के लिए भी एक learning lesson है आगे चलकर कि किस तरीके से behave करना है या किस तरीके से present करना है, क्योंकि common जो लोग होते हैं ना उनको I think these things don't connect. कि जब उनके घर में बिजली बिल का प्रॉब्लम हो और 4 करोड़ रुपए आप स्विमिंग पूल में या आप महंगे कपड़े महंगे जूते, नो मैटर हाउ रिच और पुअर यू आर, यू हैव टू कनेक्ट विद द कॉमन पीपल. उनकी बात सुनना जरूरी होता है ना. So exactly that's what I tried to say कि probably it is in favor कि he did not become prime minister now because it's very very high, very very challenging times. Maybe in the future, when things get better, he will be able to. But we'll have to wait and see whether he wants to come back, whether the party will vote for him again. These are all very hypothetical. We can't really predict at this moment of time. But for now, he said he wants to recover from the campaign. So I wish him all the best, and I'm really proud of his campaign. And I did support him in the initial stages. So definitely, but I'm not disappointed that he lost. To be very honest, Liz Truss, best wishes to her in leading the country. All the best for the Conservative Party and the country. जी थैंक यू किशोरदा फॉर जॉइनिंग अस. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट अस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक्स दिए हुए हैं एंड वहां से आप कर सकते हैं. सो किशोरदा, इट वाज नाइस टू टॉक टू यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. वी विल कंटिन्यू टू कीप इन टच. जय हिंद, जय श्री राम. थैंक यू, धन्यवाद. जय हिंद, नमस्ते. जय हिंद.